Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the course Statistical Packages and its Applications. The course code is sta641. My name is Sayyid Muhammad Muslim Raza and I am instructor for this course. In this lecture, we will study that how can we make the graphs from the data. The main objectives of this lecture will be how can we construct and interpret a frequency distribution, how can we construct a histogram, create and interpret the bar charts and pie charts, and present and interpret categorical data in bars and pie chart. Topics to be covered: frequency distribution. First of all, we will study the frequency distribution. Then we will see, after making the frequency distribution and forming the class boundaries, how can we form the histogram. Then we will see, for the qualitative data, we will represent the data in the form of bar charts and pie charts. जो पहले दो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इससे यूज करते हुए हिस्टोग्राम हम बनाएंगे, और उसके अलावा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होगा और cumulative frequency polygon also known as ogive. These will be for the quantitative data, whereas to represent the categorical or qualitative data we usually use the bar chart and pie chart, and we will discuss it in this lecture. इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अगर डाटा को, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, आपने अगर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी करनी है तो वो किस तरीके से आप बना सकते हैं यूजिंग द एक्सेल. हाउ कैन यू एडिट द ग्राफ, हाउ कैन यू एडिट द एक्सिस ऑफ द ग्राफ, all will be discussed in this lecture. Now we will see that organizing and presenting data graphically, this is the topic, and data in raw form are usually not easy to use for decision making. Some type of organization is needed. Sometimes we use the tabulation, that is we make table of the data, and sometimes we use graphs for summarizing and decision making. The techniques that we are going to review will be frequency distributions, and using the frequency distribution we can form histograms, frequency polygon, ogive, and then we will form bar charts and pie charts for the categorical or qualitative data. Class इंटरवल एंड क्लास बाउंड्रीज. जब हम डाटा को रॉ डाटा से अगर ग्रुप डाटा में चेंज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो मेन चीज है, हम उसकी क्लास विड्थ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, या विड्थ ऑफ द इंटरवल भी हमें पता होना चाहिए. जिसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें रेंज पता होनी चाहिए डाटा की, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. रेंज हमें पता होगी तो हम उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड क्लासेस, यानी कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हम बनाना चाहते हैं वो हम फिक्स करके हम उससे डिवाइड करेंगे. उसके बाद हम जो हमें नंबर मिलेगा वो हमें विड्थ ऑफ द इंटरवल होगी, उस विड्थ के लिहाज से हम अपनी क्लासेस को फॉर्म कर लेंगे. दिस इज वन ऑफ द वे टू फॉर्म द क्लास बाउंड्रीज एंड कन्वर्टिंग द डाटा इनटू ग्रुप्स. Whereas another way that we will revise in this lecture, we have discussed it in previous lectures, that हमने किस तरीके से उसको रॉ डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट किया था, वो हम थोड़ा सा इसमें रिवाइज करेंगे ताकि हम उसी को यूज करते हुए आगे हम क्लास बाउंड्रीज बना सकें और डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, कुछ थोड़ा सा
मैनुअली किस तरह किया जाता है, उसके बाद फिर हम थोड़ी सी रिवीजन करके आगे चार्ट की तरफ चले जाएंगे। हमारे पास जो रेंज है वो मिनिमम नंबर ऑफ 5 जो है क्लासेस होनी चाहिए एंड नॉट मोर देन 15। ठीक है, मतलब 5 से 15 के बीच में हम ग्रुप बना सकते हैं, 5 to 15 के बीच में। ठीक है, और वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है राउंड अप द इंटरवल विड्थ। ठीक है, अगर हमारे पास पॉइंट्स में आ रही है तो हम पॉइंट्स में तो नहीं लेंगे, हम उसको इंटरवल की जो विड्थ है उसको राउंड अप कर लेंगे, या उसको हम कह लेंगे 9.5 है तो हम उसको 9.5 या 9.6 है तो हम उसको 10 पे ले जाएंगे। अगर वो 9.4 है, 3 है, 5 से नीचे यानी कि 0.5 से नीचे है आपकी विड्थ 9.4 9.3 है तो हम उसको 9 कंसिडर कर लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल अगर हमने मैनुअली करनी है तो वो ये है, देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज द डाटा that is given to us. A manufacturer of insulation randomly selects 20 winter days and record the daily high temperature, and this is the temperature that is given here. अब अगर इसको हमने ग्रुप डाटा बनाना है तो हम किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हम इसको सेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ठीक है, अब इसको हमने स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट हमने सेंड कर दिया है। अब हम देखेंगे इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 58 है, एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, 12 है। सो अब हम क्या करेंगे, 58 minus 12 that will be 46. This will be the range for this data. Now we will select the number of classes. ठीक है, जब हम क्लासेस सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 करनी है तो हम क्या करेंगे कि 46 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी राउंड अप टू 10। दैट इज हम लोग 10 का इंटरवल रख के हम ये जो क्लासेस हैं ग्रुप डाटा है वो हम लोग जो है 10 का इंटरवल रख के बनाएंगे। अब इसमें हमें ये चीज देखनी कि यहाँ पे जो ये 5 आ रहा है, ये नंबर ऑफ क्लासेस हैं, डिजायर्ड क्लासेस, ये कम भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर हम इसके ज्यादा करेंगे क्लासेस तो इंटरवल स्मॉल हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ क्लासेस कम कर देंगे तो ये इंटरवल बड़ा होता जाएगा। तो इधर हमने 5 रखी है, जब डिवाइड किया है तो राउंड अप करके 10 आ गया हमारे पास क्लास इंटरवल। ठीक है, और विड्थ भी कहते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, क्लासेस की बाउंड्रीज की लिमिट्स डिफाइन करेंगे, दैट इज 10 20 30 40 50 60। ठीक है, दिस विल बी द बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स वी विल कंप्यूट, दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम जो एक क्लास की वैल्यूज है या लोअर क्लास एंड अपर क्लास बाउंड्री उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर हम उसकी जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उस इंटरवल में वो हम काउंट करके लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। किस तरह, जिस तरह ये है 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 and 50 to 60. These will be the classes, 5 classes that we have formed. अब हम देखेंगे कि इस 10 to 20 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ से देख के 10 से 20 के बीच में 1 2 and 3 ऑब्जर्वेशन वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। दिस इज द मैनुअल वे जिसको हम यूज कर रहे हैं। फिर अगर हम इसको एक्सेल से करना चाहें तो दैट इज एन अदर ऑप्शन, वो हम अभी रिवाइज करेंगे एक और एग्जांपल के साथ। अब इसके अलावा इस तरह हम लोग देखेंगे 20 to 30 के बीच में 6 आ रही है। इसी तरह ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है इनमें से देख के जो इस इंटरवल में लाई करी वो हम इधर लिख लेंगे। अगर हमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, हर फ्रिक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रिक्वेंसी पर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 20 दैट विल बी 0.15। इसी तरह बाकी जो है उनको डिवाइड करके यहाँ लिख लेंगे तो ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी जिसका सम 1 होगा। अब अगर हमने परसेंटेज में फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करना है, वी कैन कन्वर्ट इट बाय मल्टीप्लाइंग दिस फ्रिक्वेंसी बाय 100 एंड वी विल गेट द परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब हमने जो मेन था डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब हमने अगर हिस्टोग्राम बनाना है जिसके लिए जो भी मैंने क्रॉस बाउंड्रीज का जिक्र किया है तो वो किस तरीके से बनाएंगे या मिड पॉइंट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम इसको भी देखेंगे। व्हाट इज हिस्टोग्राम? अ ग्राफ ऑफ द डाटा इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम।
ठीक है। द फ्रीक्वेंसी द क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो नीचे हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उस पर हम लोग या क्लास बाउंड्रीज हम लोग रखेंगे, ठीक है, या हम लोग मिड पॉइंट्स रखेंगे, क्लास के मिड पॉइंट्स। दीज विल बी द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे अगर हम फ्रिक्वेंसी रख देंगे तो हमारे पास हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा आफ्टर रिमूविंग द गैप बिटवीन द बार्स। अब हम इसको देखते हैं। जो हमने पीछे एग्जांपल देखी जिसमें हमारे पास हमने ये डाटा कंस्ट्रक्ट किया था, अब हम क्या करेंगे 20 + 10 divided by 2, that will be 20 + 1 and 10, 20 + 10 will be 30 divided by 2, it will be 15। इस तरह 30 + 20 divided by 2, that will be 25। इस तरह हमने ये सारे क्लास के मिड पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट कर लिए और यहाँ पे उनकी फ्रिक्वेंसीज हमें गिवन। ये फ्रिक्वेंसीज हम वाई एक्सिस पे रखेंगे और जो मिड पॉइंट्स है हम उसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और हम जो ग्राफ है वो इस तरीके से बना लेंगे जो कि बार चार्ट से ही बनेंगे, लेकिन इसको हम लोग आपस में इनके बीच में जो गैप है उनको हम खत्म कर देंगे यूजिंग द एक्सेल। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं, और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल प्रैक्टिस ऑल दीज डाटा सेट्स कि हमने किस तरीके से हिस्टोग्राम बनाना है, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, कैसे ऑगिव बनाना है, एंड आल्सो द बार चार्ट एंड पाई चार्ट। नाउ वी कैन सी, अगर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हमने जो अभी पीछे हिस्टोग्राम बनाया है उसके बीच में जो मिड पॉइंट्स हैं उनको, बार्स के मिड पॉइंट्स को हम मिला देंगे, और आखिर में ये 5 एंड मोर इसके साथ यहाँ पे और यहाँ तक हमारे पास डाटा है, यहाँ इस मोड पे और 5 पे डाटा नहीं है, तो हम इसको अगर इसके साथ मिला देंगे इस एक्सिस के साथ तो ये क्लोज फिगर बन जाएगी। दिस विल बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिकॉज हियर वी हैव फ्रीक्वेंसी एंड हियर वी हैव मिड पॉइंट्स। वी कैन मेक इट बाय यूजिंग लाइन चार्ट, whereas अगर हमने वो यूज करना है cumulative frequency polygon, that is also known as okay, for that purpose we have to find the cumulative frequency. So first we form the classes frequency, then cumulative frequency, that is this is 3, we add this 3 with this 6, that will be 9, we will add this 9 with this 5, we will have 14, and then 14 with 4 18, and then 18 with 2 we have 20. This is the cumulative frequency. For forming the cumulative frequency polygon we will plot this cumulative frequency against the class boundaries. The difference between frequency polygon, or you can say that histogram, and frequency polygon is this, that we can plot midpoints for histogram, whereas for this cumulative frequency polygon, or also known as okay, we can only use the class boundaries, not the midpoints. Now we can see, and this class boundary is actually presented as lower class boundary. You can see that 10, 20, 30, 40, these are the lower class boundary that is plotted over the x-axis, and using this cumulative frequency this graph is formed. Now we will perform an example for all the things that we have considered, like a histogram, frequency polygon, and cumulative frequency polygon. Now we can see this is the data. This is the data which is given in the PPTs. We want to form the histogram for this data. So what can we do? There are two things that we first see, that this is the frequency. Okay, for making the class cumulative frequency we can do this.
we can write this as 0, as this is 0. Then we will write a formula that is equals to this cell plus the preceding this cell, that is 3 plus 0. We want to do this 3 plus 0. So what can we do? We can write the formula as equals to C3. You can see that this is the C3 plus D2. Then we will press enter and we will get this value as 3. Then after doing this, we can stretch this formula up to D8, and we can see that all the cumulative frequency will be formed using this formula. This will be the cumulative frequency that will be used for cumulative frequency polygon. To form upper class boundary, we will just write 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. This will be the upper class boundary. For forming lower class boundary, we will write LCL, lower class, LCB, lower class boundary, and that will be 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60. Now what will we do? We will want to make a histogram of this data. So for histogram we need this frequency and these midpoints. So we first select this data, frequency data F. Then we will go to this insert button, click on this, and we can see there are graphs over here, charts in the form of charts. Here we will select column, we left click on column, and in 2D column we can see this. There are many charts over here, but we will select 2D and the first chart over here. You can see that we will select this chart, and we can see a graph is made over here for this data. But this is not the similar as that histogram that is given on the PPT. Why? You can see that here we are given 1, 2, 3, 4, 5, and there is gap between the bars. So how can we change these axes? First of all, this is the chart title. इधर हम चार्ट को टाइटल दे सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है, ये किस चीज के बारे में. फॉर एग्जांपल दिस इज अबाउट द हिस्टोग्राम. सो हम इसको भी एडिट करेंगे. अब हम ये क्या है, ये हमारे पास लेजेंड है. दिस इज कॉल्ड द लेजेंड. जो यहाँ पे चार्ट के अंदर जो हमारे पास ये बार्स हैं, ये डिफरेंट कलर्स की होंगी. अगर तो वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आ रही है अगर, तो वो यहाँ पे लेजेंड शो करेगा कि ये बार किस चीज को शो करे. लाइक वी हैव फॉर्म द एफ, सो इट इज शोइंग दैट इट इज द फ्रीक्वेंसी. इट इज द फ्रीक्वेंसी. द ब्लू बार शोज द फ्रीक्वेंसी. The simplest way to edit a chart is, you can see over here, when you click over the chart, a window will open in Excel in which many types of options are available for editing the chart. For example, we want to have a chart title over here and the axis information over here. So we will select, we can select this one. You can see this one, it has got a title, y-axis, x-axis and the legend. So we select this chart over here, and when we click over here, then the chart will have these options like this. We want to edit it, we can click in the square by clicking over the F. We can edit it, and we can write
histogram. On the y-axis we have frequency, so we can click and edit it as frequency. Here on the x-axis we have midpoints, so you can see we have edited this graph. This shows y-axis, this shows vertical or y-axis, and midpoints here shows the x-axis. And this is a chart title, this is actually the legend, and this is the chart area. Now we can see that it is not an histogram, it is a bar chart. So अब हम क्या करेंगे, अब हम एक तो हमें यहाँ पे मिड पॉइंट्स चाहिए, और दूसरा ये कि हमें इनका गैप खत्म करना है. तो हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन द चार्ट, राइट क्लिक charting area and select data, go to the select data and left click it. You can see this window will open, and here on the horizontal category, or we can say horizontal axis, we can see 1 2 3 4 5 6 7 is given, and it is over here. We will go here, we will edit it, we will click on the edit button, and a window will open that will show axis label range. We will click over this small button and select the midpoints. Here you can see that we have calculated the midpoint. We will select this cells and then again click on this button and press OK. You can see 5, 10, 15, 35, 45 and 55 and more. This is these are the midpoints that are required on the x-axis. इसी तरह आप बाकी ग्राफ जो हैं उनको भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अगर आपका कोई यहाँ पे एडिटिंग आपको जरूरत है तो वो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया है. अब मेन मकसद हमारा था कि अब हम इसके बीच का गैप खत्म कर दें. सॉरी, नाउ वी विल क्लिक ऑन दीज बार्स, as you can see this, and right click. When you click on one of the bar, all the bars will be selected. You can see this. Now right click on the over here and go to the format data series, and you will left click on this dialog, and you can see that a window will open that shows separated and no gap. For this we will go for no gap. When we will go towards the 0, we can see that the bars are जब हमने इनको 0 पे ले गए हैं, नो गैप पे, हम देख सकते हैं कि जो बार्स हैं ये आपस में जो मिल गई हैं, इनके बीच में गैप खत्म हो गया. नाउ वी विल प्रेस क्लोज एंड वी कैन सी दिस चार्ट इज फॉर्म. लेकिन अब इसमें ये देखें, यहाँ पे हमें इनकी डिवीजन नजर नहीं आ रही कि कौन सी बार कहाँ से स्टार्ट हो रही है. इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम ये क्लिक करते हैं इस चार्ट के ऊपर, लेफ्ट क्लिक, देन वी विल क्लिक राइट क्लिक ऑन दिस bars. We can see this button, shape outline. Now we will select from here, we can select the color as black and click OK, and we can see these lines will be prominent, जो कि ये शो कर रही है कि ग्राफ जो है वो बार्स जो हैं वो किस तरीके से आपस में कोइंसाइड कर रही हैं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा हिस्टोग्राम तो कंस्ट्रक्ट हो गया. अगर हमने इसके ऊपर इनकी वैल्यूज भी लिखने हो जाते हैं, जैसे इसकी 3 है, इसकी 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक ऑन द बार and all the bars will be selected. Now we will right click on the bars and here
we can see data labels. Add data labels. Data labels are the values that will be placed over the bars. Now we will click on this button and we can see these values are placed on the bars. That shows the histogram, the value of each bar, that is frequency of each bar. Now this is the histogram that we want to make. Now we will move towards the frequency polygon. What is frequency polygon? As we have discussed that for making the frequency polygon we have to make the midpoints and connect these midpoints to form a closed figure, that is frequency polygon. How can we do in this graph? We will click on this graph. If you want to make it as a frequency polygon, we will click on these bars actually and double click on these bars. Sorry, we will click on these bars or chart, and we can see here a window will open that says change chart type. We will click on this change chart type and go to this line. Here in this line chart we have this option showing line with markers. We will click on it and we can see that the histogram that we have made is changed into a frequency polygon. Now it is not a histogram, now it has changed into the frequency polygon. It is a closed figure and the midpoints are connected to form this frequency polygon. Now we will make the cumulative frequency polygon, that is also known as ogive. For this purpose we have to plot the cumulative frequency against over the x-axis. We will have to plot lower class boundary. So what can we do? We will first select the cumulative frequency. Now we will go to the insert button, and after pressing the insert we go to the now after selecting the cumulative frequency डाटा जो है हमारे पास cumulative frequency का, इसके कॉलम को हम सिलेक्ट करके तमाम वैल्यूज को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास CF आ जाएगा और यहाँ पे भी CF लेजेंड आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया. लेकिन हमें यहाँ पे as we know we want to plot over here the lower class boundaries and here cumulative frequency. So we will edit this graph and select this category. This is the one with the chart title and axis. So over here we have, click over here and edit it as cumulative frequency CF. Here we have else lower class boundary LCB. I'm representing it as LCB, lower class boundary. Now we can see that over here we want lower class boundaries that we have calculated over here. We have written over here. So we will click on the graph and right click and select data. Go to the select data. After clicking on this select data, we can see over here horizontal axis label. We will edit it and click over here this button and go towards the LCB. This is the LCB column. We will select this data and press this button again and OK. Now we have lower class boundary over here and cumulative frequency here. We can edit it as cumulative frequency polygon. So we have seen how to make histogram, then
how we can form frequency polygon and then cumulative frequency polygon. Now we will go to the PPTs and see for the qualitative data how can we present the data, qualitative data, in the form of graph. For the qualitative data we have bar chart and pie charts. The bar chart and pie charts are often used for qualitative or categorical data. Height of the bars or size of the pie shows the frequency or percentage for each category. For example, we have this data. You can see that number of candies here, blue, green, red and orange, and for that we have 23, 20, 35, 56 and 54. This is the data that is given, and we want to form a bar chart and a pie chart. Then how can we form it? Another data is given over here, that is blue, green, red and orange, and we have different bags, bag 1, bag 2 and bag 3, and we want to form the graph from this chart. So we can see this from the first data. We have formed this chart. When we click on the pie chart in the Excel, it will represent the data as this chart, whereas these pies, the size of the pie, you can see this with 32% the pie size is bigger than the blue one, that is 14%, and 21% pie size is slice, the pie slice size is greater than 14%. So the size actually shows that how much it is representing for the whole data. Whereas the second column that is given shows the multiple bar chart. If we have only one bag or only one values like this, then we will form pie chart, or we can also form a bar chart. But when we have multiple bags, when we have multiple bags, bag 1, bag 2, bag 3, then we have to form the multiple bar chart. There will be a chart known as multiple bar that shows for each category that how much frequency is being used. If when we form a multiple bar chart, we can see that bag 1, and here is the bars for the bag 1, blue showing blue, green showing green, red showing red and orange showing orange. Similarly from bag 2 and bag 3. Whereas if we change the category and take blue, green, red and orange over here on the x-axis and bag 1, bag 2, bag 3 in the legend, then we can see that we have 3 bars representing bag 1, bag 2 and bag 3, and for each color we have multiple bars. So we will practice a data set for these all. And let's suppose we have this data set, students favorable आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज, यानी कि स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज जो उनको आफ्टर स्कूल जो है पसंद है वो हमारे पास है. प्लेइंग स्पोर्ट्स है, टॉक ऑन फोन, विजिट विद फ्रेंड्स, अर्न मनी, चैट ऑनलाइन, स्कूल क्लब्स एंड watch TV. These are the activities and these are the number of students. We want to show a graph for this. We can show this as like this. How we have constructed this graph. First we select the activity and the number of students. Then we will go to the insert and go to column, and similarly the first one over here, after clicking this you can see that number of students are here. Here we can see the activities and this legend shows the number of students.
If we want to edit and type, if you can see our number of students over here, or we want to type some heading over here, we can also type over here using this button. We can see that we have the option to, now we can see that we have an option to edit this graph. We type number of students, and over here we can see it is the activities actually, so we will type as activity. This is the graph that shows the bar chart, simple bar chart for the data. We can also insert the data labels by adding, right clicking on the bars and going towards the add data label, and this is the bar chart that is required. We can also change the color of these bars by clicking on these bars. We can see that there are different colors that are available. We can click on these on the color of the graphs, and the bars will be changed. The color of the bars will be changed. This is the simple bar chart. Now we will construct a pie chart. Let's suppose we have a survey for favorite movie, favorite type of movie, and we have asked the questions, and we get comedy as 4 response, action as 5, romance as 6, drama as 1, and fiction as 4. So to represent this data, we select this data with these respondents, and then we will go towards the insert button. Here we have an pie. We will click on pie chart, and this is the first one, pie chart. We will click over here. You can see that a pie chart is constructed with multiple colors, and the colors showing the category, that is comedy, action, romance, drama, and fiction. If we want to represent the data with percentage, we can click over. You can see that there is a percentage over here, there in the layout section. You can click over here and it presents 20, 25, 30, 5 and 20. This is actually the distribution of the overall ranking of the people into the pie chart. Similarly, if we want it by representing the numbers into the categories, we can click over here with numbers. We click over here. You can see that the category that is science fiction with its number as 4, it is like that: 4, comedy 4, action 5, romance 6, and drama 1. It is also represented over here. So you can use different options from layout for the pie chart. Now let's suppose this is a data, the survey of 145 people, and we ask them which is the nicest fruit, and they give this answer. So we want to form a bar chart, for example. For this, we select this data over here. We select this data over here and go to the insert button and column, and this is the 2D column. So this is a chart that represents the length of this bar. You can see it represents that how much this fruit is favorable, how much it is liked. From this graph we can see that grapes is least liked, and then banana, and then different fruits that are given over here. Now we will go towards the multiple bar chart. Let's suppose we have a data over here and we want to form a multiple bar chart. And the question is draw a multiple bar chart to represent the import and export of the Canada
values in dollars for the year 1991 and 1995 to 1995. ये imports हैं, ये exports हैं और ये उसका 1995 तक जो है डाटा गिवन है. So अगर हमने इसका मल्टीपल बार चार्ट बनाना है तो what can we do? We will select the data from here, import and export, then go to the insert button and on the column, and we will select this graph, 3D graph. In the 3D graph we have this option. We will click over here and multiple bars will be made representing import and export. The colors also represent, blue color shows import and the red color shows export, whereas on the category you can also see that the import and export are written over here. If we want to write over here the years, so similarly right click on the graph and select data, edit, and we will go and select it as this 91 to 95 and press OK. Then we will see 91 to 95 is highlighted over here, showing that it is the x-axis. Now if we want to see the rotation of this graph, as it is not prominent over here, we can also use this 3D rotation, and in this x-axis we can see, if we do this, the different options are available, whereas when we do this in the y-axis we can also see the graph representation, bars showing its height and its comparison with each other for each category, and press OK. This is the multiple bar chart. We can also add data labels by clicking over here, right clicking and going to the add data labels. We can see that data labels are added over here. We can also do the same thing. We can also select the size of this all data labels by clicking on this. There you can see that all of them are selected. Then right clicking on one of them and selecting it, as we can see that the size of the text is 10, we can use it as 8. We click over it as 8 and it is smaller than this, and similarly we can select it at 8 or 7, whatever we want to, whatever size we want to be displayed, we can select it over here. This is the multiple bar chart that we want to form for our representation. You can also enhance it like this for better visibility, or like this, and this is a multiple bar chart. Now there is another type of chart that is known as component bar chart. The component bar chart, it is a chart that actually shows different components in one bar, like this. Like see that the table below shows the quantity in 100 kgs of wheat, barley and oats produced on a certain farm during the years 1994 to 1981 to 1994. So we can see these are the years, these wheat, barley and oats and their production. ठीक है. Now हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द कंपोनेंट बार चार्ट. अब हम क्या करेंगे, we will select the data from wheat, barley and oats, not the years, only these one. Then we will go to the insert and column. Here we can see we have component bar. 2D, for 2D we have component bar. We can click over here and we can see that wheat, barley and oats are represented in different colors. We have this category 1, 2, 3, 4. We have to change it from years, so right click on the data and select data, go to edit, select and select the years from 91 to 94. Now you can see the years are over here, and we have to form
this whole component bar chart.